Wake up. Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? Play this song. Video played. Hello guys, welcome to the Tech Overflow. In this video, we will see that how can we install the Jarvis in our system without any error from the scratch level. If you are a beginner in coding, if you don't know about any personal assistant or if you don't know about the Jarvis, then also you can use this Jarvis for free. Okay, so I have provided you all the source code for Jarvis in my Telegram channel, so you can just definitely download it from here. Okay, so without wasting any time, let's get started and let's install this complete Jarvis with 30 plus functions in our system. Okay, you can use it for free guys. This code is free for you. In return, I am just asking you to please subscribe my channel, because for creating these much of projects, it is just very time consuming, and while creating projects we face lots of errors. So first of all, what you have to do, you have to go to my Telegram and download the zip file from there. Okay, so once you download that zip file, then you will get this type of zip file. Okay, so this is the zip file which you have downloaded, suppose that. Okay, so after that, what you have to do, you have to just simply extract this. Okay, you can use WinRAR or you can use the Windows inbuilt zipper. Okay, so you can just extract this. After extracting, you will get this type of directory structure. Okay, this type of directory structure you will get. Okay, you will get this PyCache build, and maybe you can get some docs as well, but if you are not getting, that's okay. Okay, and you will get these much of Python files such as alarm text cal, and this calculate number dictionary file for focus mode. We have lots of answers in this, and we have separate files for all the things. Okay, so you will get all these things, and this is your main .exe file by which you can directly run your Jarvis. Okay, so we will also tell you this thing, that how can you create your application, means how can you create your .exe files as well. Okay, after extracting the files, you have to just simply open this folder in the VS Code. Okay, you can just simply right click and you will get this open with code option. Okay, if you are not able to open from this way, you can just simply open the VS Code and select this workspace from there. Okay, if you have lots of options, or you can just simply open from here as well, from this directory path. Okay, so I'm just opening from here, open with VS Code. Okay, so whenever I will click on this open with VS Code, then it will just open in the VS Code. Okay, you can see it is just opened in the VS Code, and I was just working here, so you can see. Okay, now whenever you will just open this file first time in your VS Code, then you will face these errors. Okay, these, why you are facing these errors, why it is showing? Because you have not installed these modules, you have not installed the pip versions, like that way you will face lots of errors. Okay, so you don't worry guys, I will tell you by the simple thing, you can just try to solve all these errors. Okay, these are not errors guys, you have to just install some Python library modules as well, because we are just using this NumPy speech recognition for speech, so you have to just import those things in your system for working with your Jarvis. Okay, so for that, first of all, what you have to do, you have your let me tell you the system requirement is you must be having that Python any version, and after that you have to set that in an environment variables, and you must be having one VS Code or any PyCharm as well, any code editor. Only two things are required. After that, you can install the pip as well. Okay, and if you don't know that thing, that how to install the Python, how to set up the environment variable, and how to install the pip, then all the things we will discuss in other videos. If you are facing errors in those basic things as well, then you can just comment, then we will create a video on that. Okay, so first of all, what you have to do, you have to just install all these Python libraries here. Okay, so suppose that, okay, in your system you must be facing these types of errors only. Okay, I'm completely sure. Okay, so what you have to do, you will get this type of directory structure. You have to simply open the Jarvis main.py. Okay, Jarvis main.py. Okay, after that, what you have to do, you have to just simply check where you are getting this yellow lines. Okay, so let's talk in हिंदी. So guys, जहाँ पे भी तुम्हें ऐसे येलो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, उन्हें सिंपली तुम्हें इंस्टॉल कर लेना है. ठीक है, जैसे कि ये वाला इंस्टॉल करना है, नमपाई पे हमें येलो लाइन आ रही है. ठीक है, तो नमपाई को ऐसे लिखना है पिप इंस्टॉल, और उसके बाद तुम्हें सिंपल सा यहाँ पे नमपाई डाल देना है. ठीक है, पिप इंस्टॉल नमपाई, और सिंपली एंटर कर देना है. ठीक है, तो तुम्हारा नमपाई यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखना अभी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ये देखो डिफॉल्टिंग टू यूजर इंस्टॉलेशन, और ये हमारा सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है, देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. ओके, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट सेलेक्ट करके रखा, बाकी ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ग्लोबली, क्योंकि मैंने इसे क्रिएट किया, दैट्स वाई. ओके,
तो इसी तरीके से तुम सारे मॉड्यूल्स को यहाँ पे सारे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अभी मान लो PYTT इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, PYTT SX3 को अगर इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल और सिंपल सा उस पाइथन लाइब्रेरी या फिर उस मॉड्यूल का नाम लिखना है और सिंपल एंटर कर देना है, तो वो तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा और येलो लाइन्स तुम्हारी वहाँ से गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें सारी चीज़ें ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि स्पीड टेस्ट, पाई गेम, ये प्लेयर, ये वाला पाई ऑटो GUI, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और तुम्हें ये जो भी .py वाली फाइल्स हैं इन सबको तुम्हें ओपन करके देख लेना है। अगर तुम्हें यहाँ पे जैसे ये मैट प्लॉट लिब को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अगर यहाँ पे येलो लाइन आ रही है तो जिस पे येलो लाइन आ रही है यू हैव टू इंस्टॉल ऑल दोज थिंग्स, ओके। वेर एवर यू आर गेटिंग दीज येलो लाइन्स यू हैव टू इंस्टॉल ऑल दोज थिंग्स, ओके। अब बाई जस्ट टाइपिंग पिप इंस्टॉल एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द नेम ऑफ अ मॉड्यूल विच यू आर जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल, ओके। सो मैंने तो सारी चीज़ें इंस्टॉल करके रखी है, तो हम यहाँ से बेसिकली क्या करेंगे, अपना ग्लोबल वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आफ्टर इंस्टॉलिंग जैसे ही तुम सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है, उसके बाद ये सारे एरर्स तुम्हारे गायब हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। अभी मैंने यहाँ पे अपना ग्लोबली सेलेक्ट किया है, इसका जो भी पाइथन इन्वायरमेंट को हटाया अभी मैंने, देन यू विल सी हियर दैट सारे एरर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे वो कर दिया है, ठीक है। तो चलो भी इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग द इन्वायरमेंट, राइट, वर्चुअल इन्वायरमेंट, सो वी विल डिलीट दैट एंड यू कैन सी गाइस हमारे सारे एरर्स यहाँ पे गायब हो गए, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके रखी है ऑलरेडी अपने सिस्टम में ग्लोबली, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे सारे एरर्स गायब हो जाएंगे। अब तुम्हें रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो फॉर रनिंग दिस प्रोजेक्ट यू हैव टू जस्ट सिंपली ओपन दिस जाविस main.py फाइल, ओके। you have to just simply open this file, okay, and if you want to change the password then you can let me tell you that thing later on in some other videos, okay. And you have to just simply click on this run python file in terminal, and after that you will see here you will get a prompt that enter your password, okay, enter password to open javis, ठीक है। तो the password which I have given is Shivam, okay, and after writing the password you have to simply click enter, okay। अब जैसे अगर तुम्हें इसे वर्क कराना तो यू हैव टू से वेकअप, ओके, वेकअप जाविस, ओके। इसमें भी जो मैं बोला, Good afternoon, sir. ओके, Please tell me, how can I help you? you can see our Jarvis is now waked up and now we can just perform any type of calculations, or if you want to open YouTube or something then it will do that work, okay. Open YouTube, okay, you can see it is just opening the YouTube, okay। ओके, ये मैंने बोला था ना ओपन यूट्यूब और समथिंग, तो इसने वो सारी चीज़ सर्च कर दी, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है तुम्हारे सिस्टम में। अब फाइनली स्लीप जाविस, Going to sleep, sir. ओके। तो अभी ये स्लीप हो गया हमारा, देखो अभी तुम्हारा फाइनली स्लीप बोल दोगे तो ये तुम्हारा स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लिया है जाविस main.py का, एंड दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग you can install, and if you are facing any doubts then you can just definitely ask me over Instagram, over Telegram or over WhatsApp, okay। So that's all for today, meet you soon in the next very interesting tutorial। और next हम लोग अभी Alexa का कोड कर रहे हैं, we will share you that thing as well, okay। And guys please एक रिक्वेस्ट है, इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कर लेना, बिकॉज मैंने वहाँ पे बोट लगा के रखा है, जब तक वहाँ पे तुम फॉलो नहीं करोगे तो बिना फॉलो के वो बोट जो है आपको सोर्स कोड का लिंक नहीं सेंड करता है, ठीक है। So that's the message I have to convey, and that's all for today. If you are facing any simple queries, if you are facing any simple doubt, then you can just definitely ask me. There is no need for hesitation or something, okay। So that's all for today, and you can just get this code from Telegram, link will be given in the description box. That's all for today.